in our 77th episode of Friday Fleet, an initiative of women empowerment where women connect, learn, and rise. Friday Fleet is dedicated female group where we are working to uplift each one of us with a vision to empower working women with a strong support platform that fuels career growth, personal well-being, and holistic development while balancing multiple roles in our life. Our mission, Friday Fleet, was founded on 11th of August 2023. It's a community dedicated to uplifting women by providing weekly online sessions that blend self-help and technical learning. Through knowledge sharing, encouragement, and peer support, we help women excel in their careers while building resilience, confidence, and meaningful connections. So, by these words, I invite our co founder, CA Poonam Pathak, for her opening remarks. So, Poonam, over to you. Thank you so much, Gunjan. And we have with us our co-founder, Aditya sir, our mentor. I request sir to please share his knowledge because we always like grateful to have him. So, sir, if possible for you, we would. Yeah, yeah. Uh, Good evening, Gunjan, Poonam, Kalpana ji, Preeti, Atithi, Jyoti, Neeraj. I think this group is doing a wonderful work. And Kalpana ji, Poonam, what we thought, how we can assist every female member in all respect, earning, growth, personal growth, learning new things, and the variety of topics which we are able to bring to this platform. It's an amazing things, and I'm very eager. I spoke to Preeti earlier in the day, and this topic nutrition, where Poonam runs 5 a.m. group. So, and especially for the every person, if the health is not there, the mind will not work, the longevity will not be there, the productivity will not be there. So this topic to me sounds to be of first importance. Nutrition, if we have a good care of nutrition, I think we will keep a doctor away and our productivity will be high. Thank you for keeping this topic, and I pray almighty that this Friday fleet has already touched the sky and keep on soaring in our work. Thank you. Thank you so much, sir. And uh, today's topic choose by the team is such of importance because this is said like if we eat our food like medicine, then we don't need to eat medicine like our food. So what we are putting in our body, that is uh, creating ourselves, like our whole every cells is being nourished, our thoughts and other things also matters, but what the food we are eating, that is building ourselves. So it is of very important that being mindful what we are eating, but what happening in today's world, we are filled with so much of responsibility and all, and being a female, we don't put ourselves on the priority, whatever is like कि घर में क्या बचा है चलो ये खा लेंगे. And many time I also being a fitness person who likes to do things for myself, but sometimes like कि चलो वाला एक attitude आ जाता है, but it's very important to prioritize ourselves and to take time to plan our nutrition. So I'm very grateful for Preeti ji, who is going to share her knowledge, her wisdom with us, how we can plan our schedule, our diets and all, and accordingly I will also make changes in my schedule. Thank you so much, Preeti ji, and I welcome you in today's session. Stage is all yours. Thank you so much. Thank you, Poonam. So, today we are going to talk about something we often ignore in our rushed life, right? Which is nutrition, which is very important for all of us.
Our expert nutritionist is here, Preeti Choudhary. So, very warm welcome to you and thank you so much for joining us. So, I won't take much Yes. time. So, I introduce you. Yes. So, we are very thrilled to introduce you as an esteemed speaker for this today's webinar. So, our topic is, as you all know, your plate, your progress. Craft a personalized diet that work for you. So, see, Preeti Chaudhary is a distinguished professional with a unique blend of finance and nutrition expertise. Will guide you through the essentials of crafting a diet tailored to your unique needs and goals. So, about Preeti, so she is based out of Bangalore. She's a chartered accountant and company secretary with a stellar academic background, having graduated from St. Xavier's College, Kolkata. She has honored her skills in indirect taxation, serving as a tax head at Wakefit Innovations Private Limited, and is currently associated with one of the big four firms. What's more inspiring about Preeti is her passion for holistic wellness. She holds certifications in nutrition and fitness, complemented by clinical nutrition Nutrition. training, empowering her to deliver evidence based advice. With a global clientele, Preeti seamlessly merges her financial acumen with health insights to help you unlock your future full potential. So, highlights of webinar are like understanding your nutritional needs and goals, and practical tips to create a personalized diet plan. Like anyone can plan for herself or himself diet plan. And at the end of the session, we will have a Q&A session with Preeti. So thank you so much, Preeti. And thank you. And again, a very warm welcome for all the participants for joining today's session. And this session is going to be very impactful and knowledgeable. So thank you so much. So hand it over to you, my mic, Preeti. So let's get Yes. started. Thank you. Thank you. So, hello everyone. This is CA Preeti Choudhary. Before I come to the main part of the discussion, I would like to thank each and everyone present here. Because of this platform, I am able to get this opportunity to deliver what I believe related to health is and what I have learned from my knowledge and experience. A very good, I mean, I mean, you say a very thankful, thanking everyone for this giving this platform through which we young CAs are coming forward and delivering our knowledge. Let me first share my screen. Yes, is my screen visible? Not yet, Preeti. Your screen sharing, it is coming, no? For me. Yeah, yeah, it is visible. It is visible. Yes, okay. Is it visible for everyone? Yes, Yes. yes, yes. Okay. So the topic for the day is your plate, your progress. So what I mean by this topic and why I have choose this topic, because we very much relate to the plate. It's the plate which which feeds us and give us the nutritional I mean like nutritional needs. Generally, what in the word of digestion, what says that our first digestion starts when we chew the food, but the plate here means the digestion. Before the digestion starts, your plate comes in your hand. So my nutritional need starts from the basic plate which is there in the plate and which I am going to consume. That's the reason I have choose this topic, your plate and your progress. The moment you deviate from your goals, your progress, I mean like you move out from your progress. Yeah. So now, generally when I have a conversation with my client or with anyone, they asked me a very first question, that Preeti, what do you mean by nutrition? So which I have elaborated in this slide. Hi Preeti, my doctor told me to take proper nutrition, and I'm sure at the moment we cross 30, we women's start lacking deficiencies, and when we go to the doctor say, are you taking the nutrition, are you taking the right nutrition? So yeah, so the basic thing which comes in our mind is, what is nutrition? Is it just eating healthy food, or is it just eating any food, or it is just eating a specific kind of food? So for me, again,
I have just demonstrated this with a slide that hello Pooja, nutrition is not just the food we eat. It is also how the food affects us. So like elaborating it further, I mentioned that nutrition is the process of taking in food and using it for growth, metabolism and repair. And these stages includes our ingestion, digestion, absorption, transport, assimilation and excretion. So when I eat food, I must ensure that whether it's a balanced diet or not, whether my plate has all the macronutrients and micronutrients as well, which is required for my good nutrition. So just eating, for example, I go for a restaurant. I order my the things I like, and then I tell that I am full, and is this the nutrition? Is this the nutrition my body needs? Your body will tell you that for which you are deficient, and you start feeding your body in such a way that it meets the deficiency. So as per whatever the requirement that my body has, the nutrition will determine in that way. And if my body requires certain things which should, for example, I will just break down. If let's suppose I am feeling lethargic, some deficiency is there, or am I eating just my carbs? Because if you see the Indian plate, it majorly covers the carbs portion. 80% of the plate looks like entirely carbs. So am I eating the right nutrition? So to answer this, I would say my plate should look like in such a way that it has a balanced amount of nutrients, macronutrients and both micronutrients. Coming further to demonstrate that, I had divided my nutrients or my plate into two categories. First is my macronutrients. In macronutrients, what do you mean by? It means my proteins, my carbs, and my fat. Now the next question arises. What do you mean by protein? What do you mean by carbs? And what do you mean by fat? And how much should I take? What should be the quantification of my protein, carbs, and fat so that it looks like my balanced diet? Okay. Coming to the carbs, as we all know, carbs means everything which is not my protein and my fat. So carbs can be anything like your white rice, I mean rice, sugar, or you can say bread, anything which is not my protein and fats. What do you mean by protein? Protein and yeah, I'll go one by one as a for example, carbs has also a huge categories. Now someone would be eager to ask what is the fruits which we eat, whether it has carbs, it has fat, or it has protein. Generally such questions, practical questions come to me. So generally what happens, the fruits which we eat is a form of a carbs because it has fructose in it, which is again a part of my carbohydrates. So I mean like those also come under the category of my carbohydrate, I mean like carbs. Next come the fat. Fat is again divided into various categories: monosaturated fat, polysaturated fat, unsaturated fat, and trans fat. People generally believe that fats are bad for health and they should avoid it in their day to day life. But do they know that fats are again divided into two categories, which is bad fat and your good fat? If you don't add fats in your day to day meals, I mean, like your brain will not function. Fats are very important for the functioning of the brains. And what are the good sources of the fat? So good sources of the fat will generally include your unsaturated fat, which you will get from the walnuts, almonds, or you can even consume coconut oil. I mean, like even a I mean, like small portion of ghee is also recommend, and it's essential to have in your balanced plate when you are, when you are having your meals. And what you should avoid, when I call fat, you should avoid all kind of trans fat. It is very dangerous to health. And you should also avoid any kind of in our kitchen terms we'd say that I mean like what dalda or refined oil. We should avoid those, and all the junk foods, those comes under the categories of the fats. What do you mean by protein here? Now protein is very essential for our body. Proteins is the only macronutrients which is a building block. And when you consume good source of protein, you gain that strength, and restore your muscle mass. Generally what happens, the moment you cross 60 years or moment you start crossing 55 to 60 years, the old people start facing sarcopenia.
What is now sarcopenia? Sarcopenia is a terminology where, or you can say, is a body condition where once you start aging, your body without will start automatically losing your muscle mass. So to restore that, your body should have your muscle mass. You should eat good or sufficient amount of protein so that it is required to meet my daily fuels. When I talk about the Indian plate, we generally see carbs and no and almost negligible of my protein. Assuming or visualizing, just you visualize your own plate. What would you see? You would see rice, roti, or curry along with papad or achar, some vegetables. But daily, do you see in your plate whether it has protein or not in form of maybe paneer or dal or any other thing which will meet your nutritional needs? We generally find that the portion of the the portion of the proteins are very less or maybe negligible. Generally, people, when you see an Indian meals, it will be like roti sabzi or followed by some salads. But is that whether that plate has protein in that? No. But protein is again very important because it is the only macronutrients which will help you in restoring and building your muscle mass. Coming to the diet, before going to the diet plan or how to prepare my diet chart, I will also explain the what is also called micronutrients, so that you'll also understand that not just macronutrients but micronutrients also plays an important part, and this will also always help you keep healthy and will never feel you lethargic, or you can say not active, feeling lot of sleep. So could be such conditions. Now I'll come to like, let's suppose we go to a doctor for a checkup. Mostly vegetarians will have B12 deficiency, or some will have B9 deficiencies. Any B series will deficiencies will be there. What is B series? When we call as B12 deficiency, this means that your vitamins, this is vitamin B12, you are deficient in that. So not just macronutrients, your micronutrients also plays an important role, which will include my vitamins and my minerals. If I have to demonstrate, if I have to go, explaining entire vitamins and minerals, it will take a lot of time. Maybe we can capture, in the next session or something. But there are series of vitamin B like A, B, K. All those are needed for my body to recharge it. But whenever you feel that you are deficient, all it is recommended that you should also meet it from your, from your supplements as well, along with your daily needs, like you can say, if your calcium, if you find that some calcium deficiency is there, you should eat that. You should start eating lemons, oranges, depending upon what food will give which kind of the vitamins to your body. Yeah. So this is all about the macros and my micros. Not just macros and my micros are important. A good hydration is also important, which I'll cover in the next slide. And a sufficient amount of sleep is also important. Uh, Coming to this slide, I'll just tell you that how you should prepare your diet chart, and how calories are important, and how do you know that, how much should I eat. Okay. So when I have told you about my macros, which is my proteins, carbs, and fat, I'll also like to mention that protein has 1 gram of protein has 4 calories. 1 gram of carbs again have 4 calories, and 1 gram of fat has 9 calories. This is very important when we frame our diet chart, because until and unless I am not aware how much calories has 1 gram of this macros, I won't be able to customize, or I won't be able to prepare my diet chart. I'll now explain you with an example. Okay. My screen is visible, correct? Yes, Yes, Preeti, it is Preeti. visible. Its And screen is visible. can you like show in the bigger, like we are getting the small, the You can go with full screen. yeah. Okay. Is full screen. Like slideshow you can do. I have just copied the PPT. So PDF I have downloaded and copied. No, no. When you go to this one, Wait, I'll go to the presentation.
No, in this wherever you are in this meeting, na, there Yes. one thing is there that you have to close it and the full screen will come. Where is this? Audio, video. I Where This think is my it's screen? okay, then let this it. four square boxes. More me I can see. More me it is not there. Square boxes. Okay, I'll zoom that then in case. Uh, is it okay? Yes, better. Yeah. Okay. So let's suppose 1 gram, coming to the calories. Okay. So my protein has 4 gram, 1 gram has 4 calories, carbs has 4 calories, and my fat. Fat has 9 calories in that. So this is 1 gram. When I talk about calories, it is for 1 grams. Okay. Now coming to the preparation of the diet chart. Okay. So I'll go one by one. How can you prepare your diet chart? My main topic of the day is that, and I'll come to that now. So first of all, you should understand your goal. I mean, like, what is your goal? Is your goal uh, is for weight loss, or is your goal is for muscle gain, or is it just to have the strength, or to just be in a maintenance so that you don't lose your weight, or don't no, gain your muscle, don't lose your weight, or you should be in the same track as you are. Coming to, can I get an example of any attendee so that it will help me in explaining that how you can prepare your diet chart. Anyone, please, can someone volunteer, or should I take my example itself? So like I my goal is to build muscle mass. Okay, correct. ठीक है. And what muscle mass? Now what you should do, you have identified your goal. Now you should understand what is your diet history. So if my second thing is, first is to understand your goal, whether it is weight loss or muscle gain. My second is analyze your diet history. Just you recall 7 days plate, and can you just tell me how your plate looks like? More carbs. No, I just want to know in detail, like how much. Like, let's suppose if I have to talk about breakfast, what do you consume generally? Generally, it's poha, upma, maybe sandwich. So, Yeah. And now if I want to know how much, quantity like one plate. okay, fine. Coming to my your lunch. Lunch includes mostly dal rice. Most of the cases. So again, quantity, Quantity is like one bowl of your dal and some. medium size of bowl or Okay, yes, fine. rice. Similar, like Okay, we take both the similar kind of similar rice and dal in the same bowl. okay. And Salad, can you? salad may be there, and Okay, I put ghee, 1 tablespoon of ghee in fine, that. got it. And coming to your evening snacks, or coming to your evening snacks, Evening snacks, I like sometime roasted makhana and sometime I skip it when I'm in work or something. So coming I to your dinner, coming to your dinner. dinner includes like maybe moong dal khichdi and that poha. Again, I can eat in the evening, and then sometime chapati, bhaji. Or Okay, okay, got it. Can I know your weight and height, please? weight is 59 and height is 5 feet. Okay, 5 feet 59, and your age? A37. Okay, so understanding your diet history, I can see that it has majority of the carbs in it, with almost less than 10%. I mean, like, whatever the calorie intake you are doing, that not even 10% is coming from your protein sources, and you want to increase your muscle mass. Also, you have to, when I talk about increasing your muscle mass, you also have to focus on your, your protein intake, because
The sources of your muscle mass are two things: when you do a weight training and when you fuel your body with your a good source of the protein. These two, the combination will help you in the gaining muscle mass, because gaining muscle is a very tough exercise and it's not easy that you gain in just a one day. Okay, so now when I see your diet history, I understand that you are eating calories approx to 1500 to 1800. This is not the approach where I should, where one should, just assume. Based on my experience, I am telling. But again, not, sorry, not 1800, it is between 1200 to 1500. But well, since I can't quantify the amount, you are just telling bowl. So my the next step should be कि once I understand my goal and once I understand my diet history, I should calculate my calories at what, based on my goals, that how much should I eat. There are tools in the market where which will help you in calculating your BMR and TDE. I'll go one by one. What is TDE and what is your BMR? TD stands for your total daily energy expenditure, and BMR stands for your basic metabolism. Basic, you can say your metabolism. So now your, let's suppose your BMR is fixed at 1500. So it means that you should not eat less than 1500, even if you have no goal. Means like if you, even if you are at your maintenance, you should not eat less than that. Why you should not eat less than? Because this is the need of the body at, this I mean, like, this is the need. And if you eat less than your BMR, you are just, it looks like as if you are running your car without petrol in that, without your petrol. Means look, it will go for a, it will run for, or it will, you can drive for a few minutes, but then it will stop driving. It's just like that. Now what you have to calculate are two components. You have to calculate your basic metabolism and you have to calculate your TD, thermic, total daily energy expenditure. With these components and with the components of my age, weight, and everything, I calculate. There are tools. With that tools, you can calculate. I can also show you that where are those tools. Feeding those tools, you calculate your calorie intake, which I tell your calorie intake. So my, how much should be my calorie intake? My calorie intake should be always, I mean, like, you can say plus minus of your BMR and TDE. So now I have to explain you my BMR, my TDE, total daily expenditure, and how much should I what is my BMR? What is my, as per my, as per my parameters? Okay, so 1500. Okay, so as per my parameters, my right now my whatever I'm consuming is, let's suppose, is it is at 1600 calories. Okay, my BMR is, let's suppose, at 1400. So, and if I have to gain weight, if means like your goal is muscle mass. Now, muscle mass will come with your what you have to do for increasing your muscle mass. You have to increase your calorie intake, but your calorie intake should be in such a way that it should not, increase your fats in your body, and the I mean, like, what you are gaining in your, what you are gaining is only and only of your muscles. Okay. So now when you are at 1400 calories and you're present at 1600 calories, you have to create a surplus of approx to 250 for a week. So let's suppose currently you are eating 1600 calories, assuming you're eating 1600 calories, Right. and you have to increase your intake. So for a first week, you have to do a surplus of 250, approx to 250 calories. Okay. And then you after 1 week, you have to see what is your progress, and then adjustment will be made. Okay, now let's suppose whenever you are doing a surplus of 250 calories from 1400 to 250, that is your 1650 or your 1700, how you should distribute into your fats, into your muscles, and into your carbs. That is my next step. But assuming when someone wants to do a weight loss. Okay, let's suppose if I want to do a weight loss and my current BMR is 1500,
and my current maintenance, I mean maintenance of 1800, let's suppose, or 2000 calories. I'm consuming 2000 calories right now, and I want to reduce my weight. So in that scenario, after calculating my BMR, after calculating the other parameters, I will do a deficit of 10 to 15%. Let's suppose I will do 200 calories ka deficit for a first week, and I will reduce my carb intake to 1800. And gradually from 1800 I will move to 1600, but that should in any way should be less than my BMR, which is my 1500 calories. This is my mathematical calculation where you can quantify and you can understand, are you eating less or are you eating more, or are you eating as per your goal or not. So just eating anything, or you can say, for example, I tell that I want to lose weight and I am just eating roti without ghee and just eating very small portion of my meal, and I'm telling okay I want, or you can say crash diets, or just with juice or खीरा खा के मैं रह रहा हूँ, ऑरेंज खा के रह रहा हूँ, उससे आप weight loss तो देखोगे, but that you can't sustain it and you will become ill. आप when you are ill for 10 days and when you don't eat, at that time also you lose your weight, but do you look, you start looking malnutrition, or you start looking in very dull or weak. But when you eat less, I mean, like when you quantify that at what you are eating and are you eating suffice or not, in this way you will achieve your goal. At the same time, you will not feel that you're losing your strength, and you will, and at the parallelly, not just losing weight, you will gain the strength also, and your lifestyle, your biomarkers, your insulin level, or your pH, all these parameters will also increase. Poonam, let me prepare the diet chart for you. Assuming you are in 1800 calories, ठीक है, I am breaking your macros. Now first, how should you determine your macros first? ठीक है, we will take first protein into consideration. What is your weight? You told 59. And are you doing any weight training? Yes, weight training I'm doing thrice in a week. Okay. So assuming you are doing an exercises, I take 1.2 grams into consideration. Why I have taken 1.2 grams? Because if you don't do anything also, you are supposed to 59 70 calories. So I mean, like what I was where I was. So what our again before going to the Poonam story, I will also tell something, that even if I'm not doing anything, not any weight training, not doing any cardio, not doing any exercises, my body needs minimum of 0.8 gram of your body weight in protein. For example, and if you're doing weight training, it should exceed, like minimum requirement of the body is 0.8 to 1.2 grams of your body weight. So coming to Poonam case, her weight is 59, and she is doing weight training. She is also, I assume you're active in your day to day workings as well, like maybe walking or day to day kitchen activities as well. So coming to that, you need 70 grams of calories, 70 grams of calories just from your protein sources. Now, as I mentioned earlier, 1 gram of protein has my 4 calories. So you should have minimum of 70 into 4, 280, minimum 280 to 300 calories should come from your protein sources. That is essential for your body when you are doing weight training. Then the moment you start lifting more, or you start increasing your stamina, you start increasing the day to day activities, you can even extend to 1.4, but in no more scenario you should go beyond 1.6 to 2. That is my protein intake which I should get from my meal which I am consuming. Out of 1800, I have just spent my 300 calories in my food. Remaining is my 1500. Now, how I should distribute my 1500 into fats and carbs? How much should I consume fat? So, generally, ये whatever. प्रीति बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. Yes, इसको सरल बना सकते हैं क्या? Like more if 70 grams protein you said, from where we'll get the 70 grams of okay. protein, like one bowl of dal, or you can mention the 50 grams of chana dal or tur dal, like this if you can mention. But that I will mention that you can easily get from the Google also. But आपको
डाइट चार्ट अगर खुद के लिए बनाना हो तो फिर आप कैसे पता करोगे कि आप कितना मतलब कितना आपको चाहिए? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप प्रोटीन खाओ, आप प्रोटीन का सोर्सेस आराम से गूगल से निकाल सकते हो। बट अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे को कितना प्रोटीन खाना है, तो हाउ विल यू, आई मीन लाइक द फर्स्ट स्टेप शुड बी यू शुड नो दैट हमको कितना प्रोटीन खाना है, कितना फैट खाना है और कितना मेरे को कार्ब्स खाना है। अंडरस्टूड। तो हाँ, तो उसके लिए मैं पहले बता रही थी कि अगर आपको दिन भर में अगर 2000 कैलोरीज खाना होगा आपके गोल के हिसाब से, तो आपको पहले मिनिमम इतना प्रोटीन खाना है। अभी जो बचा हुआ हो उसको आपको अगेन डिवाइड करना है कि कितना मेरे को फैट खाना है और बचा हुआ मेरा आप कार्ब्स खा सकते हो। तो Then वो you चीज will आप, distinguish between what is protein, what are the sources of protein, what are the sources of carbs, what are the sources of fats. That little bit of list, if you can share, या that will I'll be do that. a हाँ great हाँ, thing. श्योर श्योर श्योर। I don't have right now with me that slide, but I'll tell. Protein generally आपका vegetarians के लिए will come from your paneer, will come from your tofu, will come from your pulses, will come from your dal, and also some even like avocado. ये सब में भी आप, so not avocado. Avocado is a good fat. Again some some vegetables. Soybean chunks, like Pardon? soybean chunks and Yeah, all. soya bean chunks is very important also. Soya bean chunks also. So all those are my sources of the protein which a vegetarian will have. Coming to the non-vegetarian, आपके चिकन ब्रेस्ट आप खा सकते हो, ठीक है, आप फिश भी खा सकते हो, बट अगेन इट शुड बी क्वांटिफाइड कि आपको कितना खाना है। एंड अगेन इट शुड बी जस्ट आई मीन लाइक यू शुड ऑल्सो कैलकुलेट कि आप जब खा रहे हो आपका फैट इंटेक नहीं बढ़ रहा हो। वो चीज भी आपको दिमाग में रखना है। फॉर एग्जाम्पल सोया चंक्स, पूनम, सोया चंक्स में प्रोटीन होता है बट उसमें कार्ब्स भी होता है। तो लेट सपोज अगर मैं सोया चंक्स खा रही हूँ तो मेरे को अपना कार्ब्स भी मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे मैं पनीर खा रही हूँ, पनीर में फैट भी होता है, तो सिर्फ पनीर के साथ मेरे को प्रोटीन नहीं आ रहा है, मेरे को फैट भी आ रहा है। तो जब तक मेरे को नहीं पता होगा कि मेरा कितना प्रोटीन, मेरा कितना फैट और मेरा कितना कार्ब्स मेरे को कंज्यूम करना है, ये चीज फिर आप डाइट चार्ट नहीं बना पाओगे अपने लिए। ये प्रॉब्लम है। अब ठीक है, अभी आपका आई मीन लाइक और प्रोटीन सोर्सेज आपके चना एंड ऑल एवरीथिंग, ये सारे कैटेगरीज में आपके मोस्टली आ जाते हैं वेजिटेरियंस के लिए। नॉन वेज के लिए आप एग्स भी, वाइट एग भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। आपके फैट में आपको क्या खाना चाहिए? आपको घी खा सकते हो, आप वॉलनट्स खाओ, उसमें गुड सोर्सेज ऑफ फैट होता है। आप एलमंड्स खाओ, उसमें गुड सोर्स ऑफ फैट होता है। अगर आपको वेट गेन करना है, यू कैन ऑल्सो टेक फ्लैक्स सीड्स, ऑल आई मीन लाइक सनफ्लावर सीड्स, ये सीड्स भी आप ले सकते हो। एंड यू कैन प्रिपेयर ए स्मूदी, बिकॉज जनरली जिसको वेट गेन करना होता है, जनरली व्हाट वी सी इज दे आर नॉट एबल टू कंज्यूम मोर बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड टू लेस कैलोरीज। एंड उनको अगर वेट करना हो तो वो बोलेंगे हम इतना खा ही नहीं सकते, हमारे लिए बहुत डाइट, बड़ा डाइट चार्ट होता है। तो यू कैन कंज्यूम सच कैटेगरीज जो प्रोटीन को आपको मीट कर सके, ठीक है। अब प्रोटीन और फैट, अब मैं कार्ब्स, क्या है कार्ब्स? मेरा जो मेरा प्रोटीन और मेरा फैट नहीं है, दैट इज ऑल माय कार्ब्स, लाइक मेरा राइस है, मिलेट्स है। बट कार्ब्स में भी आप, वी शुड अवॉइड सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स क्या होता है? जो इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं आपके ग्लूकोज में, ठीक है। लाइक मेरा व्हाइट राइस, माई ब्रेड, मेरा शुगर, जिसमें जिसमें भी शुगर होता है आपका, यू कैन सी। तो हमको वो कार्ब्स नहीं खाना चाहिए जो बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। एंड ये सब फैक्टर्स को जब आप ध्यान में रखोगे तो आप अपना डाइट बना सकते हो कि मेरा प्लेट में हमको क्या खाना चाहिए। ये सोर्सेस ऑफ मेरा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट हो गया। अब कितना खाना चाहिए उसके लिए आपको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, वो फॉर्मूला कि इतना मेरा, इतना ग्राम्स हम प्रोटीन खा सकते हैं, जो मेरा बचा हुआ है वो फैट में कितना खा सकती हूँ। तो फैट जनरली में 30% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1500 कैलोरीज में हूँ तो 1500 का जो 30% होता है उससे ज्यादा कैलोरीज मेरा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं कैलोरीज का बात कर रही हूँ, यहाँ मैं ग्राम्स का बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि 15% का 1500 कैलोरीज का 30% अगर 450 होता है, तो 450 को अगर हम डिवाइड करेंगे 9 से, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ फैट हैज 9 कैलोरीज, मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को कितना फैट खाना चाहिए। फिर बाकी आप उसको छोड़ के आप कार्ब्स खा सकते हो। तो मेरा एक बैलेंस डाइट चार्ट में तीनों चीज आ गया। और साथ में यू हैव टू ऐड मिनिमम 25 to 30 ग्राम ऑफ फाइबर। फाइबर क्योंकि इट एड्स बल्क टू योर स्टूल, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द entire, I mean like whenever you are eating food and all, तो वो it brings I mean like it gives you energy। तो मेरा प्लेट ऐसा होना चाहिए, इसमें कार्ब्स भी है, फैट भी है, मेरा प्रोटीन भी है, मेरा फाइबर भी है, एंड आई एम also hydrated and my sleep is also sufficient। The moment you keep these in track and you just start following
ठीक है, आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फूड एंड डाइट इज ऑल अबाउट द साइंस। इट्स लाइक कि एक तराजू में दो रखा हुआ है, एक में आपका वेट है और दूसरा में आप खा रहे हो। द मोमेंट यू स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ योर मेंटेनेंस, आप अगर मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट है बॉडी से, उससे आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे हो और उसका कैलोरी से आप कम खाना स्टार्ट करोगे तो आप कैलोरी डिफिशिट में जाओगे। द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग मोर यू गो इन कैलोरी सरप्लस, एंड आपका वेट गेन और वेट लॉस उस हिसाब से होता है द मोमेंट यू थिंक व्हाट योर गोल इज। तो ये नॉर्मल मैथमेटिकली थोड़ा डीप जाना पड़ेगा जब आपको खुद के लिए डाइट चार्ट बनाना हो। बट मार्केट में टूल्स है जिसके आप हेल्प से अपना बना सकते हो, और ये सारे सोर्सेस है, और ये सोर्सेस को आपको डिवाइड करके अपने ब्रेकफास्ट और अपना लंच और आपका इवनिंग स्नैक्स और डिनर शुड बी डिजाइनिंग दैट वे अकॉर्डिंगली। Am I clear till now? I think so. Everyone has some questions in mind. अगर कुछ है तो please come forward. राजकुमार सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे अभी इसको मेजर आपने बताया कि मेजर ऐसा करेंगे, लेकिन ये इतना सिंपल लग नहीं रहा है। सिंपल नहीं है, तभी तो न्यूट्रिशनिस्ट को लोग हाँ, अभी एक चपाती है, वो पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, हाँ। और बड़ा भी तो हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इसके लिए अभी मैंने आया था कि और आप अभी एक जैसे अभी दाल ले रहे हैं, दाल की कटोरी छोटी हो सकती है, बड़ी हो बड़ी सकती हो है। सकती है। हाँ, तो उस पे अगर मैं जाऊं ना तो आपको इसीलिए आया कि आपको कैलकुलेशन चाहिए। तो अनटिल एंड अनलेस आपको नहीं पता चलेगा ना कि आप कितना कैलोरीज में आपको रिक्वायरमेंट हो, आप क्वांटिफाई कैसे करोगे। तो इसलिए मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे वो ये बोला था कि आप अपने गोल्स के हिसाब से डेफिशिट क्रिएट कर लो, सरप्लस क्रिएट कर लो, और आप अपना डिवाइड करो कार्ब्स, फैट और प्रोटीन में, बट आपको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ये पूछोगे कि प्रीति मुझे कैलकुलेशन एक दो बना के कि ना 50 ग्राम्स में मेरा कितना कार्ब्स, अगर मैं एक 50 ग्राम्स दाल खा रहा हूँ तो मेरा उसमें कितना कार्ब्स है, मेरा कितना प्रोटीन है और मेरा कितना उसमें मेरा फैट्स आता है, उसका ब्रेकअप मतलब अगर जब आप लेट सपोज मैं आपका डाइट चार्ट बना रही हूँ एज ए प्रॉपर प्रोफेशनल, तो मैं आपका पहले सारा एनालाइज करूंगी, सब कुछ करूंगी, फिर मैं सारा मैक्रोज को जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ उसको फिर मैं ब्रेक करके आपको देती हूँ। तो ये चीज फॉर एग्जांपल आप मेरे से पूछ लेंगे, मेरे को तो याद हो गया है कि चले एक बोल में या फिर मतलब है ना, एक बोल में मैक्सिमम एक बोल दाल में आपका 20 ग्राम ऑफ दाल लेते हो रॉ, वही आपको जब आप उसको कुक कर लोगे वो एक बोल ऑफ दाल बनता है, और एक बोल ऑफ 20 ग्राम ऑफ मेरा दाल में इतना मेरा प्रोटीन होता है और इतना मेरा कार्ब्स होता है, वो मैं बता सकती हूँ। बट आप लोग को वो क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए रिक्वायर्ड होता है कि आप पहले समझो कि आपको कितना चाहिए, आपको कितना खाना है, और खाने के बाद आपको वेइंग स्केल में एक बार 7 दिन के लिए मेजर करके अंदाजा लगाना होगा कि इतना रिक्वायरमेंट में मेरा इतना दाल और इतना ये ऐसा पतला रोटी मोटा रोटी बन सकता है फॉर एग्जाम्पल, एंड देन यू स्टार्ट यू नो ईटिंग इन दैट वे। और आप ट्रैक कर सकते हो कि मैं किस दिन मैं अपने डाइट चार्ट के हिसाब से खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, और अगर मैं नहीं खा रहा हूँ तो मेरा कहाँ डेविएशन है, या मैंने किसी दिन चीटिंग कर लिया, ठीक है, तो क्या मेरे पास वो मार्जिन है कि मैं सफल कर सकूं अपना डाइट चार्ट को वीक, सो दैट मेरा वीकली प्रोग्रेस मेरा सही रहे। तो राजकुमार जी, आई वुड से कि थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट दैट इजी कि आप खुद से बना लो। बट माई होल पॉइंट ऑफ दिस वेबिनार इज टू टेल यू दैट बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग जस्ट एनीथिंग, कि मेरे को बोला अरे प्रोटीन में तो दाल है आप दाल खाओ, और मैं दो दो कटोरा दाल खा रहा हूँ, तो इससे आपको सिर्फ प्रोटीन नहीं आएगा, आपके कार्ब्स भी हो इंक्रीज हो जाएंगे, और आप वेट गेन में आप बाद में वेट गेन भी कर लोगे। या मुझे कोई बोला कि आप तो चलो सोयाबीन खाओ, या है ना आप तो अंडे खाओ या आप चिकन खाओ, आपको प्रोटीन मिलेगा, बट चिकन खाने से मेरे को फैट भी तो आ रहा है। तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे को कितना ही प्रोटीन चाहिए और कितना फैट चाहिए और कितना मेरे को कार्ब्स चाहिए, मेरा डाइट प्लान वो कभी वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो लॉन्ग रन में आप उसको नहीं आगे तक लेके जा सकते हो। आप कुछ टाइम पे आपको रिजल्ट दिखेगा, बट देन अगेन यू विल कम इन टू ए सैचुरेटेड स्टेट, आई मीन यू कैन से जहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है। तो उस सिनेरियो में हम रिवर्स कैलोरी डिफिशिट और सरप्लस भी करते हैं, मतलब दे आर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज कि वो पता चलता है एक इंसान का बॉडी टू बॉडी पे, मतलब आप बोलोगे नो डाइट प्लान इज वर्क विल वर्क फॉर, नो सिंगल डाइट विल वर्क फॉर एवरीवन, जैसे आपका कुछ और होगा, आपका कुछ होगा, कुछ और होगा, बेस्ड ऑन द अलग अलग नीड्स हम जब तक
वो कैलकुलेशन नहीं समझेंगे ना, आप अपना नहीं बना पाओगे वो डाइट चार्ट। तो अगर मतलब वो कैलकुलेशन समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट और कितना कार्ब्स, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन का फूड सोर्सेस में क्या क्या है, और फिर बेस्ड ऑन दैट हमको फिर अपना डाइट चार्ट, आई मीन लाइक फूड इनटेक लेना है। एक स्टैंडर्ड हम रेशियो बना सकते हैं क्या कि फैट, कार्ब्स और प्रोटीन का एक रेशियो, वो रेशियो 100 में से कितना हाँ, तो कार्ब्स होना जनरली चाहिए? हाँ, तो वो हम्म। रेशियो है ना सर, क्या होता है, अब डिपेंड करता है स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी पे। अगर मैं लो कार्ब डाइट पे जाती हूँ, अगर मैं कीटो पे जाती हूँ, लो कार्ब टाइप में जिस कब होता है जब आपको वेट लॉस करना है, कीटो कब होता है जब आपको बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है, बहुत लोग कीटो वेगर पे जाते हैं, रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे 40-30-30, किसी को है ना जो वेट ट्रेनिंग करता है, जिसको अपना मसल मास इंक्रीज करना, उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो रेशियो है स्टैंडर्ड रेशियो, बट दैट स्टैंडर्ड रेशियो विल नॉट नेसेसरी सूट टू योर गोल एंड योर बॉडी टाइप। इट विल टोटली बी चेंजिंग फ्रॉम ए पर्सन टू पर्सन। नहीं, दूसरा एक ऐसा हो कि हमारी एनर्जी एकदम हाई रहे, 100% रहे 24 आवर्स। यस। सो तो उसके लिए, हाँ, सो हाँ। एनर्जी इनटेक के लिए आपको पहले देखना है कि आपको बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं आप बहुत कम तो नहीं खा रहे, क्योंकि अगर आप गाड़ी को बिना पेट्रोल को कितना दिन तक चला लोगे, वो एक दिन में आके वो रुक जाएगा या खराब हो जाएगा, उसके इंजन खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे करके वो खराब हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको पहले देखना आप कहीं बहुत कम तो नहीं खा रहे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा आपको देखना है कि एनर्जी इनटेक होने के लिए मेरे को अच्छी प्रोटीन भी चाहिए साथ में, मेरा खाली ऐसा तो नहीं है कहीं मेरा वाइटामिन डिफिशिएंट तो नहीं है, वो भी मेरे को देखना है, क्योंकि मैक्रोज नहीं, मेरा माइक्रोज भी पार्ट करता है। एंड साथ ही मेरे को स्ट्रेंथ लाने के लिए मेरे को थोड़ा कि ना अब स्ट्रेंथ वो मेरा इंक्रीज हो, तो हमको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग जो बोलते हैं, हमारी टर्मिनोलॉजी है, वो देखते हुए हमको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस अपने आई मीन लाइक डेली स्केड्यूल में डालते रहना चाहिए। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जब होगा, proper intake of food, seeing that I'm not eating very less and doing exercise, ये जब कॉम्बिनेशन होगा आपको ना लेथार्जिक फील होगा, यू विल फील एक्टिव, एंड यू कैन सी, यू कैन, आपके बॉडी आपको बताएगा दैट है ना हाउ मच यू आर फीलिंग दैट एक्टिवनेस इज देयर इन यू, यू कैन फील योर सेल्फ ये। एंड अभी फॉर एग्जांपल आपने कभी कभी जैसे कभी आप महसूस करते होंगे कि आपका वेट आपका मसल्स थोड़ी आपका स्किन सैगिंग दिख रहा होगा, यू स्टार्टेड लूजिंग योर मसल्स, आपको कभी कभी फील होता होगा, क्यों? क्योंकि एज सार्कोपीनिया वो टर्मिनोलॉजी होते हैं कि आप यू स्टार्ट लूजिंग योर वेट आफ्टर सम एज। तो वो नहीं हो इसलिए हमको प्रोटीन इंटेक लेते रहना चाहिए। एंड अगेन इट इज अ केस टू केस बेसिस ऑल्सो, अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज इंटॉलरेंस है, किसी को प्रोटीन सूट नहीं करता है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर अलग कोई किसी को दूध नहीं सूट करता, तो सबके लिए फिर चेंज, वन टू वन चेंज हो जाता है। बट आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, आप जब समझ लोगे कि कैसे आपका कैलोरीज वर्क करता है, आप अपने लिए डाइट चार्ट बना सकते हो। और बट ये सिर्फ आपको ही सूट करेगा, इसलिए जब लोग बोलते हैं ना ये डाइट चार्ट प्लान इसका है, इसके बेसिस पे मैं 5 kg कम कर लिया, हाँ 5 kg तो कम कर लोगे, बट 5 kg के बाद फिर आप रुक जाओगे, वो सैचुरेशन आ जाएगा, फिर आप फिर से आपको लगेगा, आपको यू वोंट फील मोटिवेटेड, यू विल सी दैट ओ आई एम स्टक इन द सेम थिंग बिकॉज इट वाज नॉट मेंट फॉर यू। राजकुमार जी, इज इट क्लियर, आई मीन लाइक जो आपका क्वेरी था? नहीं, अभी दूसरा क्या है, अगर विटामिन, अभी देखो फैट, कार्ब्स और प्रोटीन, प्रोटीन, हाँ। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, फिर ये जी, विटामिन्स और मिनरल्स, इसकी खिचड़ी हो गई है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको कैसे कैलकुलेट करें? नहीं उसका कैलकुलेशन नहीं होता है। क्यों इसका नहीं होता है? क्योंकि ये क्या होता है, दीज आर नॉट इन योर ग्राम्स, ओके। इसका रिक्वायरमेंट होता है, और वो भी अलग अलग रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल विटामिन के का, पोटाशियम का, सोडियम कितना लेना चाहिए मेरा, जैसे एग्जांपल सोडियम मेरे को इतना, इससे ज्यादा लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप कोई पैकेट फूड देखोगे, आप उसके पीछे में लेबल देखोगे ना, उसमें लिखा रहता है सोडियम इतना, ये इतना, ये इतना। तो इसका अगर आपको रिक्वायरमेंट चाहिए तो मैं बाद में ये वेबिनार के बाद एक है ना कितना ग्राम से कितना, सॉरी कितना इनटेक होना चाहिए, वो मैं आपको
भेज दूंगी, बट वो कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मतलब इट इज आइडली नॉट पॉसिबल फॉर ए पर्सन कि उसको ट्रैक करे। तो मिनरल्स और वाइटामिन आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। मिनरल्स और वाइटामिन आप ट्राई तो करो, आप पहले चेक कराओगे, आप देखोगे कहाँ आप डेफिशिएंट हो। अगर जहाँ डेफिशिएंट हो तो वेदर कैन आई मीट फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेज और नॉट। इफ आई एम नॉट एबल टू मीट द नेचुरल सोर्सेज, आई हैव टू टेक सम सप्लीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर B12 का डेफिशिएंसी है और आप वेजिटेरियन हो, तो आप कहाँ से लोगे? तो in that scenario you have to resort to your I mean like supplements। and इस vitamins का सबसे difficult चीज भी ये है कि अगर आप ज्यादा consume करते हो it is harmful for your health। तो है ना, so all these things also should be you should take into consider, but you can't calculate that। Preeti, come again for B12 deficiency, what you said? So B12 deficiency generally you will find major for the vegetarian persons, ठीक है, generally because they lack I mean like their body is not able to produce that, ठीक है, या फिर हम बहुत कंज्यूम भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस में होते हैं पर वेज फूड में बहुत कम मिलते हैं आपको। तो उस केस में अगर आप डॉक्टर को चेक करा रहे हो एंड यू फाइंड दैट आपका डेफिशिएंट है, देन यू हैव टू गो टू योर सप्लीमेंट थिंग। आपको पहली बात हमको पहले जानना पड़ेगा B12 हमको कौन कौन से फूड से आ सकता है, बट आप क्या वो कंज्यूम कर सकते हो वो फूड क्या नहीं, और अगर मैं कंज्यूम कर सकती हूँ तो जितना मेरा डेफिशिएंट है उसको वो मीट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सबका कैलकुलेशन है, बट आइडली द क्रक्स ये है कि माइक्रोज का मतलब जब आपको मैं न्यूट्रिएंट्स को दो में डिवाइड करूं, मैक्रोज और माइक्रोज में, तो मैक्रोज तो आप ट्रैक कर सकते हो बट माइक्रोज आप कभी ट्रैक नहीं कर पाओगे। Yes, got it. वाइटामिन और जो आपका मिनरल्स होता है। एंड व्हाट आई कैन डू मोर ना, मैं आपको जितना भी विटामिन और मिनरल्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटाशियम, और विटामिन के केस में B12 हुआ, B9 हुआ मेरा, जो भी बी का जो कैटेगरी है उसका मैं एक भेज सकती हूँ कि इतना से इतना ग्राम के बीच में हमको इंटेक करना चाहिए, या इससे हम ज्यादा डेली इंटेक नहीं होना चाहिए। वो चीज का मैं एक चार्ट भेज दूंगी। एंड ऑल्सो व्हाट आई कैन डू इज लाइक आई कैन सेंड ए सोर्सेस ऑफ माई प्रोटीन इससे आता है, कार्ब्स इससे आता है, फूड इससे आता प्रोटीन, कार्ब्स इससे आता है, फैट इससे आता है, उसका भी एक चार्ट भेज दे सकते हैं। तीसरा व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव यू अ सब्स्टिट्यूट सीट ऑल्सो, कि अगर आप लेट सपोज किसी दिन प्रोटीन नहीं खा पा रहे हो तो उसके बदले सॉरी आप पनीर नहीं खा पा रहे हो तो आपके पास क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट यू आर इन योर सेम कैलोरी इनटेक एंड आप दूसरा वैरायटी ऑफ फूड भी इंजॉय करते हो। Yes. Good. So I can take few more questions and then I can go to the slide की, और नहीं but if you आप पूछिए और कुछ भी query है related to your goals related to fitness, because fitness is a very huge topic, it can cover a lot many things। I just wanted to understand पहला conversation में पहला में कि कैसा आपको आपका प्लेट कैसा होना चाहिए, एंड आपको गोल के हिसाब से आप अपना कितना कैलोरी इनटेक लो। यू शुड नो, आप जब अपना आप खा रहे हो आपको पता होना चाहिए आप कितना खा रहे हो, और क्या इतना मेरे बॉडी को रिक्वायरमेंट है या इससे कम है या इससे ज्यादा है। And if sometime we want to skip the meal and only fruit diet we want to do, so is it right नो, way? Like नो today दिस इज only I skipped the breakfast and had just papaya. So पपाया फॉर द इंटायर डे और जस्ट ब्रेकफास्ट में। breakfast. नो, सो अगेन पूनम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा ना, ये दीज आर नॉट द राइट अप्रोच। मतलब क्यों? क्योंकि जस्ट मैंने अभी क्या पता, अगर लेट सपोज इफ यू आर प्लानिंग योर डाइट चार्ट, ठीक है, एंड आपने अपने ब्रेकफास्ट में आप सिर्फ फ्रूट्स रखा है, ठीक है, बट आपने मिड मील में फिर आप कुछ और भी रख लियो, ठीक है, तो देन इट इज ओके। बट खाली मैं फ्रूट्स खा के रह रही हूँ तो उसमें क्या है, उसमें तो क्या आपका सुक्रोज है, क्योंकि फ्रूट्स हैज शुगर इन दैट, ठीक है, दैट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ योर अगेन कार्ब्स ओनली, करेक्ट। जो आपको एनर्जी कैलकुलेट कन्वर्ट होगा जो आप फूड खा रहे हो उससे आपको कार्ब्स मिल रहा है, आपकी प्रोटीन्स नहीं है, आपकी आपकी फैट नहीं है। तो आप एज ए ब्रेकफास्ट खा सकते हो, बट देन अगेन मिड मील में यू हैव टू ऐड समथिंग एज वेल, जैसे आप
थोड़ा सा आप यू हैव, आपको द डे यू फील दैट आई एम वेरी हेवी, ठीक है मेरे को लाइट ही खाना है, बट योर इनटेक इज इनकम्प्लीट, आप थोड़ा वॉलनट्स एंड यू जस्ट हैव सम एलिमेंट्स, फ्यू एलिमेंट्स एज वेल, लाइक 5 to 6, यू बट अगेन आई वुड से कि जब तक आप क्वांटिफाई नहीं करोगे, आपका रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेगा। क्वांटिफिकेशन इज द की, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। Got it. बट यू शुड नॉट जस्ट हैव इन टू क्रैश डाइट की, नहीं मैं पानी में कुकुम्बर का जूस पी के रह लिया, और मतलब क्रैश डाइट कर लिया, जो मैं यहाँ बोलती हूँ दैट कहाँ पे है? 3 मंथ का रेस नहीं है, वी नीड टू लिव अनदर 20, 30, 40 years, एंड दिस कैन बी इम्प्रूव ओनली व्हेन वी ईट कंसिस्टेंटली एंड फॉलो आवर व्हाट इज रिक्वायर्ड टू माई बॉडी। जैसे मेरे को सिर्फ क्रैश डाइट नहीं खाना है, क्योंकि उससे शॉर्ट टर्म आपको रिजल्ट मिलेगा बट लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा, और हमको ये मतलब आवर बॉडी शुड रन फॉर द नेक्स्ट 30, 40 years। जो मैं आज मेरा जो डाइट चार्ट होगा या आज मेरा जो प्लेट जो दिखेगा, वो मेरे को 30, 40 साल तक वो मेरे को है ना, मतलब इट शुड गिव द सेम स्टैमिना, सेम एनर्जी लेवल, सेम एवरीथिंग। So, walnuts and almonds, हम्म soaked and non-soaked, यू which शुड are ईट good source for soaked overnight, soaked is better thing। And peeled, I think also better, removing the peel. almonds peels should be removed or it should be No, consumed? you should remove it. Yes. Water, how much water, Preeti, one should take? Generally, it is recommended you should at minimum have at least 3 to 4 to 5 liters of your water. 3 to 4 is, you should not less eat. I mean, have less than 3 to 4, and you should be hydrated. Your body will tell that इतना पानी तो हमको चाहिए ही, जैसे मैंने हाइड्रेशन पे भी बनाया था। With the age also the water intake will differ, means जनरली नो यू कैन से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ना फॉर एग्जांपल आपके वाटर इनटेक डिफर नहीं करेगा, वाटर इनटेक आपको कम बेसी या ज्यादा लगता होगा, वो डिपेंडिंग होगा। मे बी आप लेट सपोज बहुत एक्सरसाइज करके आए एंड यू स्टार्ट फीलिंग थर्स्टी, आप ज्यादा पानी कंज्यूम करते हो, या कभी कभी आप देखते हो कि आपका शुगर लेवल्स वगैरह बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा थर्स्टी फील करोगे। तो एज का कोई रिलेशन नहीं बोलूंगी मैं, द रिलेशन कुड बी मे बी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, which you should listen to your body and you should start taking action. Agar let's suppose if you are finding something unusual, then maybe there is an alarming, or your body is telling you something. It's that situation. For example, thirst हमको कब लगता है? When my body signals that I should that I should have some fluid. तो जब आपको ऐसा लग रहा है ना कि something is unusual, you should listen to your body. again the morning intake, evening intake, afternoon intake, means you can take any time any quantity of water, or like evening you should restrict, or like अगेन that. अगेन ऑल दोज आर मिथ ज्योति, कि इवनिंग में पानी नहीं पीना चाहिए, ये ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पानी जब तक आपको लग रहा है कि आपको अलार्मिंग फील नहीं हो रहा, आपको अनयूजुअल नहीं फील हो रहा, आप पियो। बट जब मोमेंट आपको ऐसा लग, फॉर एग्जांपल आप जानते हो अपने आप को, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं दिन भर में मैं 4 लीटर पानी पी रहा हूँ, बट अचानक से आप देख रहे हो कि नहीं, आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही हो, आप 7 लीटर 8 लीटर पी रहे हो, देन समथिंग इज अनयूजुअल। तो ऐसा कि मेरे को शाम में नहीं पीना, रात में नहीं पीना, ये मिथ है। हाँ, खाने के बाद तुरंत नहीं पीना चाहिए, दैट इज राइट, बट बाकी सब मिथ। ये सब जो बोलते हैं ना कि ये नहीं करो वो नहीं करो, फैट्स खराब होते हैं, या आपको व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए, ब्राउन राइस खाओ। व्हाइट राइस हो या ब्राउन राइस हो, दोनों में ही कैलोरीज होता है और दोनों में ही कार्ब्स होता है। हाँ, फाइबर इंटेक ज्यादा होता है कम होता है, बट अगेन आप जब आप डाइट पे हो तो आप डाइट पे सब कुछ खा सकते हो, बट ओनली इन मॉडरेशन। एंड मॉडरेशन मतलब आप अपना डाइट क्वांटिफाई कर लियो। द क्रक्स एंड द सिंपल थिंग इज यू शुड नो द क्वांटिफिकेशन। A very nice explanation, Preeti. Thank you. Preeti, I have one more question. यस गुंजन Like, जी। sleep is also connected with our diet.
Yes. Like I So, do, yeah, hmm. So I do what work from happens? home. Please, Gunjan, Sorry. let me. Yeah, I'll let you. Please complete. No. जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, व्हेन आई वेंट टू ऑफिस, तो उस टाइम पे क्या होता है, डे में हम पूरा थक जाते हैं तो रात को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। बट जब घर से ही करते हैं तो वो टायर्डनेस नहीं होती, तो उस टाइम पे ना रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती। तो इज इट कनेक्टेड विद डाइट एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव दैट? नो नो, सो जनरली स्लीप का डाइट से क्या रिलेशन ये होता है कि व्हेन यू डोंट हैव गुड स्लीप, नो, योर हार्मोन्स, सम हार्मोन्स आर देयर इन आवर बॉडी, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी, जिससे विच विल ट्रिगर योर, आई मीन लाइक, हंगर लेवल। ठीक है, वो स्लीप का कनेक्शन होता है। बट द ओनली थिंग दैट मैं कुछ आई मीन लाइक कुछ घर पे वर्क फ्रॉम होम करी उस दिन नींद नहीं आता बिकॉज योर बॉडी इज नॉट टायर्ड। ठीक है, मे बी दैट इज रिलेटेड बट फूड एनी हाउ इज नॉट रिलेटेड टू द स्लीप इन दैट कैटेगरी। बट ओके। स्लीप, व्हेन यू डोंट हैव इनफ स्लीप, it triggers your hunger level, hunger hormones. ओके, Yes, थैंक yes. यू। या Hi, Preeti. Hi, Ashwini ji. Yeah, I have one question. Yeah, Actually, during my second pregnancy, I had gained a lot of weight, and in about 5, 6 years, I have reduced totally around 16 to 17 kg. great, great. And I have a question. Is there any way to measure whether I am losing my fat or my muscle? यस, तो मैं इसको ना एक अच्छे एग्जाम्पल में समझाती हूँ कि जब आप समुद्र में कुछ निकालते हो, आप एक बीच गए, ठीक है, आप पानी, आप सोचे कि आप पानी निकालोगे, बट पानी के साथ कुछ बालू भी आता है, राइट, कुछ गिट्टी पत्थर भी आता है। तो सिमिलरली जब हमारे बॉडी में, जब हम, आपने बोला 16 to 17 kg आपने लूज किया, तो बॉडी में आपने फैट भी लूज किया है, आपने मसल मास भी लूज किया है, और आपने वाटर, जो बोलते हैं वाटर, स्टार्टिंग वाटर इनटेक होता है, वो भी लूज किया है। तीनों चीज ही निकलता है। बट अगर आप चाहो ना कि मेरा कार्ब्स ही निकले और मेरा प्रोटीन रिस्टोर रहे, तो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा। प्रोटीन बोलते हैं आपका मसल्स रिस्टोर्ड रहे, क्योंकि हमको अपना मसल्स को नहीं लूज कर सकते। ठीक है, तो आपको प्रोटीन इंटेक रखना पड़ेगा, वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और डेफिशिट में जाना पड़ेगा। और कैलकुलेशन की हम सिर्फ देख रहे हैं कि आप, हमारा मसल तो खाली नहीं लूज हो रहा है, इसके लिए दे इज नो परफेक्शन जो आपको बता सके कि ना, दिस नो यू कैन से कि परफेक्शन से आपको बता सके कि नहीं, आपने सिर्फ कार्ब्स ही, कार्ब्स मतलब आपने सिर्फ फैट लूज किया है, नॉट कार्ब्स, आपने मसल मास को रिस्टोर किया है, वैसा कुछ नहीं है। बट अगर दे आर क्लिनिकल machines and all which can measure actual कुछ कुछ, but again those are very high costly and all, and those are generally taken by राके, sorry, दो एथलीट्स एंड ऑल, वो लोग मेजर करते हैं, वो देखते हैं ऑल। बट ऐसे तो आपका तीनों ही लूज हुआ है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोटीन इंटेक, आपका मसल रिस्टोर है, तो आपको प्रोटीन इंटेक लेना पड़ेगा। आपने जब 16-17 kg लूज किया, हैव यू सीन योर स्किन बिकमिंग सैगी? तो स्किन वाज एकदम टाइट, फर्म, सब कुछ है। Yeah, I have restored my glow also. So like Glow to uh, anyhow will be, you will be restoring it, because again, it was an unnecessary, because your body never wanted you to be in that, I mean like weight or that calorie intake। जब आपने reduce किया होगा, जब आपने, when you started eating less and when you started eating sufficient, I mean like what is required, you must have felt that the आपका energy level increase हो गया होगा, you have become more active, योर लाइफस्टाइल हैज बिकम वेरी गुड, ये सब भी आपने फील किया होगा, एंड आई एम श्योर जब आपने 16 to 17 kg लूज किया होगा, योर प्लेट वुड बी, अगेन, इट वुड बी अ बैलेंस ऑफ दिस थ्री कंपोनेंट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कार्ब्स खा के या कम खा के इतना लूज कर लिया। आई एम श्योर वो तीनों चीज ही होगा, बिकॉज ऑल अबाउट साइंस ओनली। करेक्ट इफ मी इफ आई एम yeah. रॉन्ग। Yeah, I have या taken guidance from a nutritionist only. या So for 1 month, I have taken the diet plan and I continued and I made it a lifestyle. यस, करेक्ट So करेक्ट, सो like from the whatever we were doing regular idli, dosa, poha and all, just I have shifted to this oats chila, moong dal करेक्ट chila करेक्ट and besan chila and करेक्ट, यस, that try to use this though I'm not quantifying whatever is being eaten but daily based on whatever I'm gaining or reducing whatever the energy I am feeling हम्म and so हम्म on
Yeah. And based on normal, like how much ghee I am using, how much coconut Hmm. oil I am using, it's a normal strategy. I'm not quantifying Yes. each and everything. Yes. So quantification also, Anshwani, what I recommend is that 7 days you should do because you will get a fair idea. आप रोज रोज सबको कोई नहीं करता है, बट आप अगर 7 दिन कर लोगे ना तो यू विल गेट ए, जैसे आपको पता हो गया होगा क्योंकि यू आर मे बी यू हैव बीन कुकिंग सिंस लॉन्ग फ्यू इयर्स, आपको पता है कि 1 चम्मच घी में क्या आता है। बट जो बिगनर है, ठीक है या फिर मे बी समवन हु वांट्स टू प्रिपेयर देयर डाइट चार्ट फॉर देमसेल्फ एंड वो न्यू है, तो उसको स्टार्टिंग में क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा। And I also taken this help from Healthify Me app, where I have just keyed in whatever I had for the day, and it showed me whatever the कैलोरीज यू, micronutrients, macronutrients, calorie, whatever, whether there is deficiency or this and all. या करेक्ट। Initially, I've taken help from that also. Yes, yes. And one more thing is, actually, I heard weight training is important for muscle gain. But what about yoga? If is there anything that if though I don't do go to gym and all, just by doing yoga, is there any way to gain muscle mass also? So yoga will give you flexibility. Yoga Huh. will help you, but the results which you will get from the weight training will not be similar to yoga. Yoga you should inculcate in your daily routine because it's not just help you from flexibility and other things. It will also give a lot of peace of mind. But when it comes to weight training, it has a lot much advantage in comparison to yoga. Yeah. Yeah. So to save muscle, weight training is must. Yes. Yes. Okay. Again, both are different things also because in yoga you are mostly having your you use your body weight for exercises, ठीक है? जैसे for example you do yoga योगा में आप पुशअप्स भी इंक्लूड करते हैं। सूर्य नमस्कार जब आप करते हो उसमें हाफ पुशअप भी इंक्लूडेड होता है। वेट ट्रेनिंग में भी जब करते हो तो आप यू नो you use before going to before you hit the machines and all or before you use some external weight for you, आप वार्म अप में पुशअप्स वगैरह भी करते हो, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा बहुत लिंक होता है, बट अगेन बोथ आर डिफरेंट थिंग एंड बोथ का रिजल्ट्स आर डिफरेंट। Yeah. Okay. या, Thank you. थैंक यू। आई जस्ट सम फ्यू स्लाइड्स मोर, ज्यादा Rajni, नहीं। Rajni was also asking some questions. Preeti, sorry. या श्योर। Rajni, can you please ask? She has mentioned in chat bot. Let me. She is asking, when I get up in the morning, then my hand fingers are swollen from 2 years. हैव यू चेक दिस विथ योर डॉक्टर? Rajni, you're on mute. Uh, hello, Rajni, can you hear me? Okay, I think we can take at the end now. Mhm. You can go Yeah, ahead. it's like just a 2 to 3 minutes का। So ideally जैसे कुछ कुछ बोलता है fat is always bad, if I gain weight I am failing, तो है ना all these are myth। fat खाली bad नहीं होता, it's both good and bad as well। जैसे मैंने बताया good source of fat लो, ठीक है। फिर कुछ कुछ ऐसे आई मीन लाइक कि हेल्दी ईटिंग, कोई बोलता है कि यार मैं तो सब चीज छोड़ दिया खाना, मैं हेल्दी खा रहा हूँ, तो मैं ना ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, बट आप सब कुछ खा सकते हो ओनली व्हेन यू आर ईटिंग इन मॉडरेशन। और आप क्वांटिफाई कर रहे हो कि आप अपने कैलोरीज के अंदर खा रहे हो ये नहीं खा रहे हो। तो दिस इज ऑल वी शुड नो। और बहुत सारे ऐसे मिथ है कि हमको ये नहीं खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड कि वो मिथ है या फिर एक्चुअली में उसके पीछे कोई लॉजिक या साइंस है। सो दिस थिंग आई वांटेड टू से। ये ऑलरेडी मैंने मैक्रोड्स का कवर कर दिया, हाइड्रेशन कवर कर दिया, कैसे हमको डाइट प्लान बनाना है वो भी कवर कर दिया। बट आई थिंक सो दैट इज मोर टेक्निकल एंड मे बी इनिशियली यू वुड नीड सम गाइडेंस का हेल्प, बट फिर आप बाद में खुद से अपना बना लेते हो, ठीक है। अगेन कैसे आप अपना, जैसे फॉर एग्जांपल वी वीमेंस जनरली हैव टू डू मल्टीटास्किंग, वी हैव टू गो टू ऑफिस, वी हैव टू गो सी आवर चिल्ड्रंस, वी हैव टू मैनेज आवर डे टू अफेयर्स। तो इस बिजी डे में हम कैसे व्हाट वी शुड डू सो दैट नो वी आर ऑन ट्रैक, वी मैनेज आवर कैलोरीज, वी एंड वी आर नॉट डिविएटेड। तो मोस्टली क्या है कि अगर हम जिम भी नहीं जा पा रहे तो एटलीस्ट हम घर में some स्क्वाट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, विच विल हेल्प जनरली गर्ल्स के लिए। our leg muscles are very important,
So we should do some squats, push-ups kar lo, planks kar lo, some body weight exercises kar lo if you're not able to go to gym, walking kar sakte hai, and whenever we would be having a lot of calls and all, so we can do that as well. So khali food important nahi hai, both food and exercise, movement, weight training is also important when you manage your healthy lifestyle. But since our topic were more into the diet thing, I have focused on that. But अगर किसी को कोई क्वेरी पूछना है वेट ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेस के लिए भी, यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन गो. Yes, Preeti. So Rajni is actually writing on chatbot. She is traveling, so she can't speak, I think, due to Okay. some reasons. Uh, So she is but asking that can you suggest some reason or any specific test if her no, fingers no. are swollen? So I would say in case if she's seeing every day, so coming to the diet chart, because I don't know that there could be some other reason as well. But when I'm concerned with when I am more into the your diet and thing, so you should also see and also check whether any you are allergic to any food or not. Because sometimes this can also happen that when you are allergic to certain food, you may feel some kind of inflammation or swollen thing as well. And for this, I would say that it's better you test and all. I think so. I am not the right person to answer that what kind of test and all you should do. That you have to consult a doctor. But coming to the food thing, I can recommend that you can check that are you allergic to any food or not. In case if you're allergic to some food, you can just exclude that in your diet and can see whether are you feeling better or not. Yeah. Thank you, Preeti. Yeah, thank you everyone. Anyone, any questions? Anyone have? Hi, Preeti. I Pooja here. So I want to ask a question. I am on a fat loss journey, and but I am eating sufficient, not too much and not too low, 3 times a day. But it's been 15 days, but I have not seen any weight loss in my journey. Where am I going wrong? Can you help me with that? I am having protein, carbs, fat, both, but I am not measuring the quantity of it. So am I doing wrong or right? So first of all, I would say that when you tell that you are eating, right, are you sure you are eating right or not? Because you have not quantified first, and the food you are eating, you have to also be very specific that how much you are eating. Just telling this that that I am eating good, whether this good is in your, I mean like in your eye point of view, or any external is also looking into that are you eating correct or not. Secondly, generally what we ignore it, we tell that we are eating correct, ठीक है हम healthy खाए, but कभी कभी हम we do snacking as well, okay, and we just ignore. For example, कब शाम हुआ हम कुछ ना अरे एक समोसा ही तो है खा लेते हैं ना, अरे दो टू बिस्किट्स ही तो है हम खा लेते हैं ना, but those foods also will hinder your progress. So again, you have to also take those into consideration when you are calculating, and when you are माइंडफुल अबाउट योर गोल्स कि आपको फैट लॉस में हो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं दैट यू आर नॉट सीइंग प्रोग्रेस, देन समवेयर यू आर डूइंग रॉन्ग. बिकॉज अगेन इट्स ऑल अबाउट साइंस. अगर आप फैट लॉस में हो और अगर आप डेफिशिट में हो, योर यू विल श्योरली गेट रिजल्ट. इट सीम्स कि आपका डाइट इज नॉट मे बी यू आर नॉट ईटिंग रिक्वायर्ड, यू आर ईटिंग मे बी मोर, और मे बी यू आर स्नैकिंग. आप स्नैकिंग कर रहे हो बट आपको पता नहीं चल रहा है दैट those are also increasing your calorie intake. So something is off. You have to recheck, revisit your what you're eating. आप अपना 7 दिन का डाइट हिस्ट्री निकालो, देखो क्या एक जगह लिखो कि आपने ये खाया है हर दिन. अच्छे से सोचो और फिर क्वांटिफाई करो, फिर रीइवैल्यूएट करो कि क्या आपने सही और राइट और जितना चाहिए उतना खाया है या नहीं. So, Preeti, I have one more question. I feel like you know better than me. So, can I consult you regarding that? Do you make diet charts for us, like our type of customers? Can we contact you personally, or where can we contact you so that you can make diet chart for us? And do you take payment like charges? Can you clear on that? Because I feel you're having a great knowledge. So I also want to know about Yeah, that. Pooja, we can talk on this later, maybe after the call. Okay. You can personally text, and then I can address your queries. Okay, thank you.
Preeti, with your permission, you can share your number over the chat. Yeah, sure. Yeah, please. Thank you, whoever had answered. You can please send me your email or your mobile number so that I can consult you and have a call with you later on. Because I Yes. really like whatever you told. Because what I was doing past 15 days, I was doing. I think whatever question has been arose here with like people who whatever they have asked, I am doing everything the same thing. And now I think my diet chart should be completely changed, so it will be really helpful if you send me your email ID or your number so that I can consult you. Yeah, sure. I have texted my number. I'll also share you my email ID. We can. Thank you. You can please ping in the ping box. Thank you. Yeah, sure. Thank you. Okay. Anyone else have any question? Please ask. Otherwise, we are concluding. Yeah. Okay. No questions? Okay. Thank you. Thank you so Thank much, you. Preeti, especially for joining us today. The session has given us practical and even science-based insights with nutrition that we can usually use in our daily lives. We can use that. A big thank you to you for simplifying such an important topic. Let's take these learnings forward and make our lives healthier. Yeah, sure, Thank sure. you so much. Thank And you. thanks to all the participants for joining us. So I hand over my mic to Poonam Pathak for vote of thanks and presenting certificate of appreciation to our speaker. Thank you so much. Thank you. So I can. from From the where can team I side, download the certificate? yeah, we will share on mail with you. Oh, that's great. Great. And from the team of Friday Fleet, it is accepted as a token of love from our side. And this topic is little bit complicated, but you tried your best to make us understand how we can make, and there is a depth of the knowledge I can feel in the session, how to calibrate, how exactly I'm going to make changes regarding this. So from the bottom of my heart, please accept. Sure, sure, sure. Thank you, everyone. I think so. Since this topic is quite technical from the calculation of the calorie part as well. So maybe something, I mean, like when until and unless you don't study, that clarity will anyhow be missing. But again, whenever you're eating, just be mindful of whatever your plate is, and then you can see your progress. Thank you so much, Gunjan, for moderating the session and running this show so beautifully. Thank you so much, Gunjan. Thank you, Poonam. Thank you, Preeti. Thank Have a you. very great evening and have a nice weekend to all of you. So let's meet in the next session. Thank you. Thank you. Shall I drop now? Yes. Can I drop Yes. now? Yes.